गांव तो बहुत छोटा है लेकिन गांव में रहने वाले लोगों का दिल बहुत बड़ा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हमारा फर्स्ट व्लॉग शूट होगा जिसमें हम आपको बताएंगे बहुत ही सुंदर मंदिर के बारे में। तो वहाँ जाके आपको मंदिर की सारी जानकारी बताएंगे, तो आप बने रहिए वीडियो के साथ, क्योंकि अभी बजे हैं सुबह के 5। अब हम आपको रेडी होने के बाद मिलेंगे, तब तक आप वीडियो के साथ बने ही रहिए। तो फाइनली हम हो गए हैं रेडी और हमारे भाई भी हो गए हैं रेडी। गाइस, हमने आपको बताया नहीं कि व्लॉग कहाँ शूट हो रहा है। तो मैं फाइनली अभी फालना से सिरोही जिले के झड़ोली गाँव में आया हूँ। तो यहाँ मेरा फ्रेंड रहता है, तो हमने डिस्कस किया कि यहाँ एक बहुत ही सुंदर सा मंदिर है। तो मंदिर का वहाँ बहुत ही सुंदर नज़ारा है, वो हम आपको वहाँ जाके बताएंगे। तब तक आ रही है वीडियो के साथ। अभी गाइस हम पैदल ही रवाना है, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है। चलने में कैसा मज़ा आ रहा है? अभी एकदम मज़ा जोरदार। अभी आ गए हैं थोड़ा दूर तो। गाइस बस अब आ चुका है और आपको ये गेट पीछे दिख रहा होगा, ये फर्स्ट गेट है और यहाँ पहाड़ियों का नज़ारा एकदम बिल्कुल शानदार। एकदम देखते ही मन खुश हो गया, बहुत ही शानदार। फाइनली हम पहुंच गए हैं, बस आप व्लॉग के साथ बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। मंदिर का प्रवेश द्वार आ चुका है और ये पूरा ऊपर तक जाएगा। ऊपर से नज़ारा एकदम बहुत ही देखने लायक है, आपको ऊपर जाके सारी चीज़ें बताते हैं।
में बहुत मज़ा आ रहा है। जब आप व्लॉग देखोगे तब आपको भी बहुत मज़ा आएगा। और जो ये मंदिर है सिरोही जिले के जाड़ोली वीर में स्थित है और यहाँ विशेषकर सोमवार को बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और इस मंदिर की बात करें तो ये बहुत पुराना मंदिर है और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है सिरोही जिले के आसपास का। और यहाँ करीबन जो आपको ये सीढ़ियाँ दिख रही है 360 प्लस सीढ़ियाँ है। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ मतलब जो पांडवों ने यहाँ तपस्या की हुई है, जो हम आपको ऊपर जाके ज़रूर बताएंगे। तो आप बने रहिए व्लॉग के साथ। बस मंदिर के अंदर हम पहुंचने वाले हैं। बहुत ही आनंद आ रहा है, मज़ा आ गया। ये हमारे यहाँ इधर बैठने की जगह है ताकि जब यहाँ ज़्यादा भीड़ हो और गर्मी के टाइम में यहाँ लोग आसानी से बैठ सकते हैं, बड़े बुजुर्ग वगैरह। तो गाइस हम मंदिर के अंदर आ गए हैं। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। यहाँ जाके अंदर जाके आपको व्यू बताते हैं। तब तक व्लॉग के साथ बने रहिए। गांव तो बहुत छोटा है लेकिन गांव में रहने वाले लोगों का दिल बहुत बड़ा है। बहुत प्यास लगी थी, बहुत ठंडा पानी मिल गया, बहुत मज़ा आ गया। जटाटवी गलज्जल
का भी बहुत ही शानदार नज़ारा है, देखने लायक है। मुझे तो लगता है कि आपको भी यहाँ आके भगवान के दर्शन करने चाहिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। लाइक शेयर एंड कमेंट। कहे गाइस।